आईबीडी गोटे डिजीज जोटा कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बेसिकली जो जीनगत समस्या थाए से एनवायरमेंटल इनसल्ट हुए जो थी कि कोलन भितर घा हुए बा इम्यूनोलॉजिकल अल्टरेशन जो एनवायरमेंटल इनसल्ट रे डायट गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर डायट माने खाद्य आम खाद्य पदार्थ एक्चुअली बहुत प्रकार रोग देहरे मॉडिफाई कर खाद्य पदार्थ आम दैनंदिन जीवन में कौन खाऊ आम जदि अधिक तैलयुक्त खाद्य खाइबा बहुत चर्बी मसला जातीय खाइबा एक्सेसिव मटन बा रेड मीट खाइबा जंक फूड खाइबा डेफिनेटली हमको विभिन्न प्रकार समस्या देखा जो आम तेल कथा कहूँ तेल इट्स नॉट जे कि आम जो तेल खाऊ से तेल छाड़ देकी आम अन्य तेल खाइबा किंतु देखा जाइए ऑलिव ऑयल या भल हो पारे गोटे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज किंतु इंपोर्टेंट कथा है ऑलिव ऑयल को जब आम कुक करी रोसे करी खाइबा से तार से जो गुण प्राय नष्ट हो ऑलिव ऑयल को फॉरेन बाहर कंट्री रे माने सलाड रे आउ से माने जस्ट फ्राए रे करने यूज करती से भाया जदि आम यूज करूँ ताले लाभदायक हो पारे आउ किंतु मस्टर्ड ऑयल आउ सब ऑयल जे खराब से कथा नुह कि आम ध्यान दबा ताले केवल तेल उपर ध्यान दबानी आम सब प्रकार खाद्य पदार्थ तार संतुलन अच्छी कि ना से कौ परिस्थिति अच्छी ताकू आम ध्यान दबा देखा जाए मेडिटेरियन डाएट जोटा आम कहूँ जोटा कि आईबीडी भल से आमर जो डाएट आमर ओडिशार डाएट प्राय मेडिटेरियन डाएट भाई आम कर कौन जमी पखाड़ दही आउ माछ भजा अंडार व्हाइट पर्सन बा अंडार धड़ा पर्सन फ्रेश फ्रुट्स सालाड्स वेजिटेबल्स आम जमी डालमा सन्तुला आम ओडिया खाद्य से खाद्य गुड़ा भल माने पारंपरिक खाद्य गुड़ा डेफिनेटली भल जो पिज्जा बर्गर जंक फूड और अन्य सब आम जो आईबीडी कंसोर्टियम गोटे करूँ ओडिशा रे जब आगु जना था कि ओडिशा प्राय आईबीडी बेसी हुए ना कि आम ए जाचु लास्ट किछ वर्ष धरिकी ओडिशा रे भी आईबीडी बहुत अच्छी तेणु से गोटे आईबीडी कंसोर्टियम मु आईबीडी कंसोर्टियम कोऑर्डिनेट करुच्ची ओडिशा रु 5 वर्ष है आम देखुचु एवं पर्यटन आम पाखे प्राय 1,500 पाखापाखि डाटा लोकंर डाटा रखा सरी तो कौ खाद्य एक्चुअली खाइले भल हम कौ औषधटा ओडिशार लोक काम करुच्ची आउ ओडिशार लोक मान प्रेजेंटेशन कौन देखो आमर जो रोगर प्रेजेंटेशन कथा आम कहलु प्रेजेंटेशनटा इंडिया रे नॉर्थ पार्ट रे जहाँ हम साउथ पार्ट रे से हेनी वेस्ट पार्ट रे जहाँ हम ईस्ट पार्ट रे से हेनी कहीं आमर खाद्य अलग आमर चालीचलणी अलग आमर खाद्य पदार्थ रुचि भी अलग आउ आम आमर जीन्स भी अलग तेणु आमर जो खाद्य पदार्थ आम ओडिशा रे जो खाद्य पदार्थ आम खाऊँ से आम लोक कौन हो कौन ना तारी उपर आलोचना कर निष्कर्ष बाहर आउ 5-7 वर्ष पर आमको जो डाटा आहरी बेसी हो आम गाइड कर कौ खाद्य पदार्थ ए खाइबा उचित कौ खाद्य पदार्थ खाइबा उचित नुह कौ औषध देले आम ओडिशा लोक मान काम करुच्ची ये सब उपर डाटा आम बाहर से कनसोर्टियम करा भारत और इस्राएल डाएट आम जो गोटे आईबीडी कथा कहूँ सब देश में कौन कौन खाद्य पदार्थ नहीं कौ खाद्यटा हुए जमी मुझे कहली पाश्चात्य देश मान देखा जाइए ऑलिव ऑयल भल तो सीटू आम ऑलिव ऑयल को एडेप्ट करुच्ची सेमती आमर जो किसी खाद्य देखा जाऊँगी कि इस्राएली मैंने भी भल लगुच यही खाद्य खाइले हुए तो आईबीडी समस्या कमी तेणु खाद्य पदार्थर संतुलन और समन्वय रक्षा करी पूरा विश्व रे आम गोटे खाद्य पदार्थ एमती करें कि यही खाद्य पदार्थ यही रिजन अनुसार आम आईबीडी को हेल्पफुल हो पारे। I think it is very important that we are discussing inflammatory bowel disease or IBD because earlier it was not common in India and now we are seeing thousands of cases across the country. This is associated with the westernization, changing lifestyles, and it's a kind of a lifestyle disease. Importantly, it can affect people in the active years of life. So that is very important because it's a chronic lifelong condition, requires early diagnosis and treatment. Otherwise, there can be long-term hospitalization, poor quality of life, and therefore there needs to be an awareness about this disease. There needs to be awareness amongst the people. There needs to be awareness amongst the doctors also to ensure early diagnosis and the right treatment. On of the statement that the lifestyle of the people in changing of edible oil
So what's of edible oils weaken the IBD? It is not as direct as that, but what we are seeing is ultra processed foods. Whatever you are eating out of a packet, not cooking at home, is perhaps one of the reasons why IBD is increasing in our part of the world. So you have to be very aware at an early age. Children need to be taught that ultra processed foods, the so called fast foods, are not the best. High fruits are good. Data is now showing that the Mediterranean diet, where they use more of olive oil, is perhaps the best food. But we cannot change to olive oil right now. But it's not affordable for everyone. Yeah, no, one is affordability, second is our food is tasty without the olive oil. So I think oil should be restricted, not a large amount of oil and fatty foods, more healthy food, high fiber, high fruits, high vegetables will be the crux. Is it hereditary? uh, Genetic component has been found, but it is much lower. So Okay. even it's not hereditary per se. So a person who has IBD does not mean that their children will all have IBD. It's not as direct, but we have seen some cases where within cousins all of them have had it, or in some father daughter or mother child, but that is not common. So earlier it was not here. So maybe there is some genetic defect, but it is hidden when the environment is right, when the diet is right. When you change the diet, or Indians, when they are traveling outside the country in the US or in the Western world, the number of IBD cases actually increases. Is it IBD curable, permanently curable? I wouldn't use the term permanently curable, because this is a disease which comes and goes and can come again. So we need to give two kinds of treatment. One, like if there is a fire, what do? You first bring down the fire. So there is one form of treatment which brings down the fire. And then we need to take steps. We need some medications to see that the fire should not happen again. With modern day medicine and modern day treatment options that we have, I think majority, if not all, patients should be able to lead a normal life, a normal career, a normal married life, have children, and live normally. Thank you.